So students, now it is time to study about the national parties of India. Here some information is given to you in this rectangular column, where we have to understand first how the national parties become are formed. Okay, so every national party was once a regional party. Regional party का मतलब है वो एक पर्टिकुलर रीजन में काम करती थी, और नेशनल पार्टी का मतलब है पूरे देश में काम करती है. तो कोई भी रीजनल पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इन द प्रीवियस चैप्टर इन द लेसन इलेक्टोरल प्रोसेस. हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन इज़ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विच कंडक्ट्स द इलेक्शन. तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रीजनल पार्टी से उठा के नेशनल पार्टी का दर्जा देने का काम ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है. तो उस रिकग्निशन के लिए क्या क्राइटेरिया दिया गया वो देखेंगे. सी A political party should secure minimum 6% of valid votes in 4 or more states in the earlier Lok Sabha or state assembly elections, and minimum 4 members should be elected in the Lok Sabha from any other state or states in the earlier elections. तो पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोकसभा में टोटल कितनी सीट्स हैं. तो ऐसा समझ लीजिए कि लोकसभा में टोटल 543 सीट्स है. ओके, आउट ऑफ दिस 543 सीट्स अ पॉलिटिकल पार्टी, अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मस्ट गेन एटलीस्ट 6%. तो ये जो 6% है उतना उन लोगों को लाना पड़ेगा. ये 6% कितना होता है, एक अप्रॉक्सीमेटली हम ऐसे पकड़ के लेते हैं 542 6% होता है 33 सीट्स. तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी रीजन में 33 सीट्स के ऊपर किसी भी स्टेट में जीत जाती है 33 सीट्स से, या फिर कोई भी 4 स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स में वो कम से कम 33 से लेकर सीट्स जीत जाते हैं, तो वो एक रीजनल पार्टी से एक नेशनल पार्टी बन जाती है. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया दैट दे हैव सेट. एंड द नेक्स्ट इज द कैंडिडेट्स of a party should be elected from minimum 2% constituencies out of the total Lok Sabha constituencies and minimum 3 states. तो टोटल लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज है 542. तो अभी हम देखेंगे कि लोकसभा में टोटल 542 कॉन्स्टिट्यूंसीज है. तो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज वाले स्टेट्स में आपको बताना चाहूँगा जो है महाराष्ट्र, जिसमें है 48. जिसके बाद है यूपी, जहाँ पे है 80 सीट्स. तो ऐसे जो स्टेट्स है, फिर बिहार है 40 सीट्स वाला. तो ऐसे स्टेट्स में से कम एक स्टेट में से 2% लोग चुन के आने चाहिए. अगर इफ दे आर इलेक्टेड फ्रॉम आउट ऑफ 542, इफ एनी 2% पीपल और 2% सीट्स आर दे विन, that particular party becomes a national. So now let us briefly discuss about those national parties which are working in India. Okay, so let us see. This is given to the reference of Election Commission of India. Notification is number is given dated on 13th of December. So this information is provided by the Election Commission of India, which was recorded on by 13th of December 2016. So there are total number of 8 national parties in India which are working. So we shall be discussing first the seven national parties, and in a presentation after this video we will be seeing the 8th party. तो हम लोग पहले देखेंगे वो कौन सी 7 नेशनल पार्टीज है जो सबसे पुरानी है और इंडिया में काम कर रही है. तो पहली है इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 28th of December 1885. So this is the oldest party in India. Its age is almost 134 years, and with the help of 72 delegates, it was founded at Gokuldas Tejpal Sanskrit College in Mumbai. So this particular party, that is Indian National Congress, is the oldest party in India, working in India according to the age. At the time of its establishment, Congress was an all-comprehensive movement working for national independence. एक कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है एक ऑल राउंड, एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी वर्किंग फॉर द नेशनल इंडिपेंडेंस. हमें पता है कि कांग्रेस का फॉर्मेशन तब हुआ था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने की बात चल रही थी. तो ग्रुप्स विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैड कम टुगेदर इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट. दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट ग्रुप्स फ्रॉम डिफरेंट आइडियोलॉजी.
सो अंडरस्टैंडिंग दिस द ग्रुप्स विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज, आइडियोलॉजीज का मतलब आपको पता है प्रिंसिपल, अलग अलग प्रिंसिपल्स के, अलग अलग नेशनलिटी के, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ आए इंडिपेंडेंस के लिए, एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था ये। आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस emerged एज द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी, डोमिनेंट का मतलब है सबसे ताकतवर पार्टी इंडिया में अगर कोई उभर के आई थी तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। So, the party from the beginning follows the policy of secularism. Secularism का मतलब है all religion should be treated equally. All round development, equal rights and welfare for minorities and disadvantaged sections of the society. तो ऑल राउंड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस है या फिर जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीब हैं, उनकी मदद करना। ओके, ऐसे सोसाइटी में ऐसे सेक्शन जहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं पहुँचती, गवर्नमेंट का हेल्प नहीं जाता, ऐसे लोगों के लिए काम करने का काम करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। So the Congress has organized various programs to achieve those objectives. The party believes in the democratic socialism, social equality and international peace. तो ये है इस पार्टी के आइडियोलॉजीज, ये है इसके प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स कौन से है? द पार्टी बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशल इक्वालिटी एंड इंटरनेशनल पीस। So now let us talk about the next party. The next party is the Communist Party of India. Now this particular party was founded 26th of December 1925. This party is 94 years old. तो ये पार्टी भी बहुत पुरानी है, 94 years पहले इस पार्टी को बनाया गया था। तो it was an old party in India. This party works for the welfare of laborers and workers. तो ये पार्टी किन किन लोगों के लिए काम करती है? लेबरर्स मतलब जो ऐसे लोग जिनके मतलब जो लेबरर्स होते हैं, हम इन्हें कामगार भी कहते हैं, जो दूसरे के फैक्ट्री में जाके या फिर दूसरे की खेती में काम करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेबरर्स एंड वर्कर्स। तो वर्कर्स वो है जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। सी द पार्टी अपोजेस कैपिटलिज्म। आपको पता है कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? तो ये पार्टी का काम था कैपिटलिज्म को अपोज करना। हमने देखा है in the what you say very first chapter we have sees the what is the difference between capitalism and communalism। तो कैपिटलिज्म में होता क्या है आपको पता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज करने के चक्कर में जो सोसाइटी के डाउन ट्रॉडन लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा जिनका हाथ होता है इस कैपिटल को बढ़ाने के लिए, उनकी तरफ ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें कम पैसे देते हैं, सैलरी वेजेस कम पे होती है, इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ऐसे कैपिटलिज्म के खिलाफ थी ये पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। द पार्टीज लीडरशिप डेवलप्ड डिफरेंसेस इन 1962 ओवर द इशू ऑफ वेदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया शुड एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट चाइना और सोवियत यूनियन। तो इसके चक्कर में इस पार्टी का स्प्लिट हो गया, दो टुकड़ों में यह पार्टी बढ़ गई। एक पार्टी थी, दिस लेड टू द स्प्लिट इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड अ सेपरेट पार्टी दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया विद द मार्क्सिस्ट वाज फॉर्म्ड। तो आप समझ गए, दो पार्टीज़ हैं, अलग अलग सोच वाली दो पार्टीज़ हैं, इनका काम भी वही है, एक दूसरे की तरह ही सोचते ये लोग, सिर्फ पार्टी का नाम अलग है और आइडियोलॉजीज अलग है। So let us now talk about the next discuss about the third party, which is the Bharatiya Janata Party, also known as BJP. So Bharatiya Janata Party is an important party at national level. ये कांग्रेस के बाद से सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली नेशनल पार्टी है। It was founded on 6th of April 1980 and this was the party which split from Congress. So this party is 40 years old. The Bharatiya Janata Sangh was established in 1951. This party merged with Janata Party that was established in 1977. So this party has been somewhere merged with the Bharatiya Janata Sangh. It was closely related with Congress also, and the Janata Party was established in 1977. See, the Janata Party could not survive. इसका मतलब है कुछ इंटरनल डिफरेंसेस के वजह से 1951 को जब ये भारतीय जन संघ में थी तब वहाँ से वो स्प्लिट हो गया, अलग हो गई। द स्प्लिट वॉज इन द पार्टी एंड भारतीय जन संघ द कॉम्पोनेंट पार्टी ऑफ जनता पार्टी एस्टेब्लिश्ड अ न्यू पार्टी इन 1980 नोन एज द भारतीय जनता पार्टी। तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी नाम की एक नई पार्टी तैयार हो गई। द पार्टी स्टैंड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो ये जो पार्टी है इसका आइडियोलॉजी किन चीज़ों की तरफ होती है? तो इंडिया कल्चर और उसके ट्रेडिशंस के साथ में। द पार्टी गिव्स इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है।
तो ये जो पर्टिकुलर पार्टी है ये किसके प्रोटेक्शन के लिए खड़ी होती है? इंडिया कल्चर और ट्रेडिशंस के साथ। आपको ये बात भी पता होगी कि भारतीय जनता पार्टी का भी सेंट्रल गवर्नमेंट है। Now that BJP is the ruling party at Delhi, they have formed the central government and it has been ruling the past 6 years. So let us move on to the next party, which is the Communist Party of India, Marxist. So while talking with the Communist Party of India, we have already discussed about a similar named party, which is the Communist Party of India, the original, and this is the second most part, means the split. That is, the Communist Party of India follows Marxist theory. This party proclaims socialism, secularism, and democracy. If you go and search of all the 7 parties, all the parties almost have the same types of ideologies, but just a small difference. See, the Communist Party of India, that is only CPI without the M, they oppose capitalism, and here they oppose imperialism. You know what is imperialism? When a stronger group or a powerful nation tries to control smaller nations, it is known as imperialism. So this party opposes imperialistic rule and nature. Okay, party's policy is to protect the interest of workers, farmers, and landless laborers. Landless laborers means those laborers which have left their state छोड़ के ऐसी जगहों पे दूसरी जगहों पे काम करने वाले जिनके पास अपना खुद का लैंड नहीं, मीन्स दे आर नॉट फार्मर्स. So the next is Bahujan Samaj Party, also known as PSP. It professes socialist ideology. And when was the party founded? See, the party was founded on 16th of April 1984. That is, this particular party is 36 years old. Okay, in 1984 the party was established with the objective of protecting the interest of the majority. Now here the majority word here does not mean the majority population of India, but here the majority means the system of the caste. Okay, the scheduled caste, scheduled tribes, religious minorities, and other backward classes together constitute a majority. We are talking about an Indian population where there is a fine line between rich and poor, so we are going to be discussing about that. तो इंडिया का जो मेजर पॉपुलेशन है वो अमीर लोगों का नहीं है, वो गरीबों का है. तो इसमें ऐसे गरीब है जो कुछ शेड्यूल कास्ट में है, बैकवर्ड क्लास के है, शेड्यूल ट्राइब्स में है और बाकी की. The party aims to give power in the hands of these majority. The party aims that it should be working that the government should not be only working for all the highly privileged people, but those who really need it, those who really need the help of the government. So the next is the National Congress Party. Now this was the split. This particular party was a split from Indian National Congress in 1999. It was formed in the year 1999, that is 10th of June 1999. This party came into existence, that is 20 years ago. The party was founded by Shri Sharad Pawar. Now the party believes in the values of democracy, equality, and secularism. So these things are very also important. सी मैनी ऑफ द पार्टीज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि बहुत सारी पार्टियाँ ऐसी है कि उनकी आइडियोलॉजीज सेम है बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन अ वेरी ग्लोबल प्लेटफॉर्म स्पेशली on the national level. The party was in power of Maharashtra from 1999 to 2014. That is, they have formed a coalition government with the Congress party for 5 years. The Nationalist Congress Party was a long period, was also a part of the coalition government led by Congress at center, that is from 2004 to 2014. तो कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब आप लोगों को पता है कि जब कोई मेजॉरिटी में कोई पार्टी जीत नहीं पाती है तो वो दोनों एक यूनिट की तरह काम करते हैं, एक पार्टनरशिप में आते हैं. तो कांग्रेस के साथ उन्होंने 1999 टू 2014 तक महाराष्ट्र में रूल किया. उसके बाद वो सेंटर मतलब दिल्ली में भी रूल किया. So the next party is the Trinamool Congress Party. Okay, so this party is also known as TMC. The party was formed on 1st of Jan 1998. That is almost 22 years. The election commission gave the party recognition in the national party in 2016. तो आप सोच सकते हैं फ्रॉम 1998 टू 2016, 98 तक ये पार्टी एक रीजनल पार्टी थी, बट इन 2016 इट गॉट recognized as a national party. The party supports democracy, secularism, and protection of interest of the weaker sections of the society. So each of the national parties are active in some or other states. So now this is the newest addition which is not there in the book. It is that
in this is the this is the eighth national party which got the recognition in 2019. Name of the party is People's National People's Party India. It is especially works in Meghalaya, that is in the northeast. So this particular party got its accreditation and recognized in 2019 as a national party. So this particular party, that is the NPP, that is National People's Party of India, is also this is the eighth national party, आठवीं national party के रूप में ये सामने आए. So let us see a small quick view at the number of seats secured by the national parties in Lok Sabha elections in 2009 to 2014. So this is the names of all those parties. Okay, the national party is a number of seats, so the total number of seats in the Lok Sabha elections. As you know, see Indian National Congress, you can see the number. There are some changes, slight changes, there are some ups and downs. Okay, the Indian National Congress in 2009 had 206 seats, while in 2014 it came to a meager of 44 seats. So looking at the names of the parties, we understand that in 2009 Congress was standing as a dominant party, but suddenly in 2014 it came to 44. We'll talk about this by the end. See here, Communist Party of India in 2009 had 4 seats, but now it has only 1 in 2014. The Bharatiya Janata Party 116 in 2009, suddenly 282, that is a long leap, almost double the leap in 2014. Communist Party of India, the Marxist, 16 seats by the 2009, and only 9 seats, that is a big loss, I say. Bahujan Samaj Party 21 and no seats. National Congress Party 9 and 6. So I have tried to illustrate with the help of the red color here, this all these parties had lost seats. So this happens especially when the party fails to fulfill the needs and the demands of the public. जब कोई पार्टी, नेशनल पार्टी, पब्लिक लोगों को मदद करने में या उनसे किए गए ही प्रोमिसेस, अपने एजेंडा को फॉलो करने में नाकामयाब होते हैं, तो उनकी सीट्स इलेक्शंस में कम हो जाती है. तो यहाँ पे एक विन विन सिचुएशन है कि कहीं पे इन लोगों के पास ज़्यादा था, अभी इन लोग, तो हर एक इलेक्शन, मतलब 5 साल के बाद जो इलेक्शंस आता है, इसमें हर एक पार्टी के लिए एक चुनौती होती है. इट्स लाइक अ बिग व्हाट इज ए रिस्की सिचुएशन फॉर देम, बिकॉज दे हैव टू प्रूव देमसेल्फ और दे विल नॉट बी एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट. सो इट्स ऑफ वॉलेटाइल नेचर. If you don't work for 5 years, you can see the condition what it happened here. But and if you work very nicely, you can see. Okay, so it's like a they have to perform well, they have to do well with the people, they have to fulfill their promises and so on. So let us move on. See here, now there are some snippets here from the paper. Let us read it one by one. Power shift in Tamil Nadu, political marketing leading to terror, formation of a new party in Maharashtra, looking for opportune time to give up power, which portfolio, home or social welfare, coalition of PDP and BJP, Haryana Janhit Congress achieves to objective, anti-deflection law, conducive to democracy, Shiromani Akali Dal gets clear majority. So these are small, snippets from the paper. Now, what do they tell us? See here, you have to be reading different news in newspapers. Through these news items, we get information about the various parties existing in different states of India. So now we are going to talk about the regional parties. So do these parties function only at state level? Yes, initially the regional parties only function at the state level, but as per the guidelines by the electoral commission, if they follow the guidelines, they get a chance to move and work at the national level. Some state leaders are influential at the national level, while some have influence only at state level. Why is it so? So this is a question of debate actually, but we shall be seeing into this later. See here, with the help of such questions, we will try to get information about the various regional parties in India. We will study some of the regional parties from different parts of India. तो हम अभी इस सारी इन्फॉर्मेशन के चलते रीजनल पार्टीज़ के बारे में जानेंगे. पहले हम जानेंगे कि रीजनल पार्टीज़ किस तरह से काम करती है और वो अपने अपने पार्ट में कैसे काम करती है. देखो, इन इंडिया we find people speaking different languages and having different traditions and culture. तो इंडिया में एक कल्चरल डाइवर्सिटी है, एक बायोडाइवर्सिटी है, ट्रेडिशंस की डाइवर्सिटी है. तो इसे में
हर एक किसी को अपने लैंग्वेज के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा होना ऐसा लगता है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. सी वी सी डिफरेंट रीजन्स हैव देयर ओन लैंग्वेज. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड different geographical regions in Maharashtra. In Maharashtra, there exists geographical and cultural diversity. Maharashtra is different from Madhya Pradesh and Karnataka. तो महाराष्ट्र के बारे में हम लोग यहाँ पे ज़्यादा क्यों बात कर रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि महाराष्ट्र में हर किसी सोशल बैकग्राउंड से कहो या फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड को हो या फिर रीजनल बैकग्राउंड से लोग आते हैं काम करने के लिए. तो महाराष्ट्र का जो पॉलिटिक्स है वो बाकी के स्टेट्स के पॉलिटिक्स से बहुत ही अलग है. Okay, the feeling of affinity developed about our language and region gradually turns into the identity consciousness and finally gives rise to regionalism. तो regionalism का मतलब ये भी होता है that having pride and faith and what do you say about a particular person's region. Okay, we have a proud feeling for the region we live in, the region where we are born. So this gives rise to regionalism. People start thinking primarily about the interest and development of their own region. तो यहाँ पे वर्ड देखो क्या है कि हर किसी को अपने रीजन का अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए ऐसा लगता है. एक आइडेंटिटी, लोगों के आइडेंटिटी के साथ, आइडेंटिटी मतलब उनकी पहचान के साथ एक चीज़ हो जाती है, वो होती है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी. लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी का मतलब है आपकी पहचान आपसे, आप जिस भाषा में बोलते हैं उससे होती है. आप जिस रीजन को बिलोंग करते हैं इसे आप अपनी आइडेंटिटी समझते हैं. तो रीजनल आइडेंटिटी डेवलप्स फ्रॉम द कॉन्शियसनेस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन एंड द फीलिंग दैट पीपल बिलोंग टू द रीजन शुड हैव अ क्लेम ओवर रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. तो ये एक सही चीज़ भी है क्योंकि आप जिस रीजन में जन्मे हैं, आप जिस रीजन में काम कर रहे हैं, उस रीजन के रिसोर्सेज पे, उस रीजन के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे आपका हक पहले बनता है, ऐसा आपको लगने लगता है. तो ये सारी चीज़ें किसी चीज़ को किस चीज़ की तरफ डायरेक्ट करती है, इसे बोलते हैं लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी. तो आप जो भाषा बोलते हैं उससे आपकी पहचान होती है. तो हमारे देश में कई सारी भाषाएं हैं, कई सारी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़ है. जैसे मराठी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, हिंदी बोलने वाले लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन जगहों में पाए जाते हैं. पंजाबी बोलने वाले लोग पंजाब में पाए जाते हैं, गुजराती बोलने वाले लोग गुजरात से आते हैं. तो ये अलग अलग लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो होती है वो अपने रीजन के प्रति होने वाले प्यार के वजह से, वो प्राउड फीलिंग की वजह से, अदर की वजह से होता है. When linguistic, regional, cultural and other identities get connected, regional consciousness emerges as a stronger feeling. तो ये जब तीनों चीज़ें एक साथ आती है कि किसी एक रीजन, लैंग्वेज और उसके कल्चर के बारे में होने वाला एक कनेक्शन, उसके बारे में होने वाली एक स्ट्रॉन्गर फीलिंग, तो वो एक रीजनल पार्टी को जन्म देती है. तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डिफरेंट एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया. So the regional parties are those group who have a proud feeling about their different identity or the region. So these people think that they should have the power over their region. They should get a chance to rule over the particular region and somehow develop at all the different levels. The levels may be educational level, economic level, political level, okay, healthcare and different facilities. So let us discuss more about that. See here. For the development of the region, they demand more autonomy and authority. So the regional parties give preference to the regional problems, okay, and they try to solve them on a level where they need help from the federal government, that is central government, okay, and try to protect their autonomy. मतलब वो अपने हिसाब से काम करने चाहते हैं, उन्हें सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए रहती है, लेकिन वो अपने आप ही सारे काम करना चाहते हैं. तो regional parties make several demands such as regional problems should be resolved at a regional level, political power should be in the hands of the people, where from region and residents of the region should get preference in administration and jobs. So ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिमांड होती है हर उस रीजनल पार्टी की कि जो लोग उस रीजन को बिलोंग करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में और प्राइवेट जॉब्स में उन लोगों को पहला अधिकार मिलना चाहिए. तो ऐसी डिमांड्स होती है रीजनल पार्टीज़ की. रीजनल पार्टी का काम पूरे देश के लिए अलग से होता है, लेकिन अपने रीजन के प्रति उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है. तो लेट अस सी द चेंजिंग नेचर ऑफ द रीजनल पार्टीज इन इंडिया. So let us understand this.
See, initially India was governed by a single dominant party, that is the Congress, but later, after the post independence, that after the independence period, the Congress started to have split up and small parties were generated out of that. Then initially regional party identities gave rise to the separatist movement. जब कोई नई पार्टी बनती थी तो उनकी सबसे पहले डिमांड आती थी हमें एक अलग सा देश बनाना है या हमें एक अलग सा स्टेट चाहिए. We have seen this. See, we have the independent Khalistan movement, where the people who were living, particularly especially the Punjabi speaking people who were living in Pakistan and India, they started to demand for a separate country for people who belong to the Sikh groups. Then we have Dravistan, made by the objective of parting from Indian Federation and exist as an independent state. तो वो डिफरेंट एक स्टेट मांग रहे हैं या फिर एक डिफरेंट कंट्री मांगने वाली ऐसी चीज़ें चालू हो गई. लेकिन रीजनल पार्टीज फ्रॉम पंजाब, तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर हैव मेड सच डिमांड्स. सो दिस पर्टिकुलर डिमांड्स ऑफ अ separate state where it will fall, it will work with the what do you say, central government, but on an autonomous form where the government of India will have no control. These what do you say, states, they demanded, the regional parties demanded for such. So which were the regional parties? They were from Punjab, Tamil Nadu and Jammu and Kashmir. Okay, the next is the demands of the regional parties gradually change. Instead of an independent state, they started demanding for more autonomy. Autonomy का मतलब है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी काम नहीं होना चाहिए. मतलब कोई भी हम क्या बोलते हैं उसे, कहेंगे कि हम लोग कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसमें आपका कोई भी डिसीजन नहीं चाहिए. हम लोग अपना काम करते रहेंगे, आप सिर्फ हमें मॉनिटर करें, ऐसा. दिस वाज द सेकंड स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल पार्टीज. द स्टेज बिगैन आफ्टर 1990. तो ये स्टेज 1990 के बाद से चालू होने लगा कि एक सेपरेट स्टेट, ऑटोनॉमस स्टेट की जगह वो कहने लगे कि हम अपना काम करेंगे लेकिन आप अपना इंडियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली का, हम हमें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. So the next is that the regional parties demanded that the development of the region, people from region should get power at the state and national level. For example, Shiv Sena and Telugu Desam. Now these two parties are very important regional parties. They are the most influential regional parties, especially in India. We shall be discussing about them, but later. The development of the regional parties in northeast shows a different trend. They gave up their demand of separatism and have started demanding autonomy. हर किसी को ऑटोनॉमी चाहिए. ऑटोनॉमी का मतलब है सेल्फ रूल. हम अपनी तरह से रूल करेंगे, आपसे हमें सिर्फ थोड़ी सी मदद लगेगी, लेकिन यू विल नॉट do what do you say, you will not have any control over that particular state. Okay, the regional parties from northeast are now entering the mainstream of the national politics. Initially the northeast states did not have any what do you say, they did not have any influence or any control in the national politics, but now they are emerging as a strong force in the national politics. So in short, we can say that the role of regional parties in India has passed through various phases, from separatist to autonomy and now towards entry into the mainstream politics. Coalition politics is one of the consequences of their increasing influence in national politics. Coalition का मतलब आपको पता है, coalition मतलब जब दो गवर्नमेंट्स एक साथ आके रूल करते हैं. So now let us speak about some major regional parties. Okay, so the first important party is Shiv Sena. So Shiv Sena was founded by Shri Balasaheb Thackeray in the year 19th of June 1966. So this particular party was actually formed after the formation of Maharashtra by 1960 later. So the main political party in Maharashtra, okay, so this is a very important political party which is active in Maharashtra. The objectives are protection of the rights of the Marathi speaking people, promotion of Marathi language, resistance to people from the regions. Okay, so this is the main objective, that according to a regional party, so this party's work was for the protection of the rights of the Marathi speaking people. Okay, उन्हें ऐसा लगता है कि बाहर से आने वाले स्टेट्स से जो लोग आते हैं, ओके, उन लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलना चाहिए. फर्स्ट प्रेफरेंस किसी भी रीजन में
उस रीजन में जो पहले से लोग हैं, जो मराठी स्पीकिंग पीपल है, उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तो ऐसी इनकी सोच है। इन 1995 इट एंटर्ड इनटू कोalition विद बीजेपी एंड केम टू पावर इन महाराष्ट्र। इट शेयर्स पावर विद बीजेपी इन महाराष्ट्र सिंस 2014। तो 2019 में भी शिवसेना महाराष्ट्र में रूल में है। So let us now discuss about the next regional party, which is Shiromani Akali Dal. This is a very famous party and it is very active in the state of Punjab. This party was founded on 14th of December 1920. That is, since 99 years, this particular party, Shiromani Akali Dal, is very active in Punjab. So the objective of this particular party is to cultivate religious and regional identity of the Sikh people. Like assume power in Punjab for many years. That means it has ruled Punjab for many years. Now let us move to the next party. This is Jammu and Kashmir National Conference, established on 15th of October 1932. It's 87-year-old party. It protects the interest of Kashmiri people and the protection of autonomous status. So the next is the Assam Gan Parishad. This party was founded in 1885. It resolves the problem of displaced people. Displaced means those people who have to leave their own places, regions, and they come and take shelter in that particular state. Protects the unique cultural, linguistic, and social identity of Assam and economic development of Assam. Now, Assamese people are closely related uh, because of their outlook, the way they look. So these people are mistaken mostly being not part of India, but actually Assam is a very nice state of India, and these people belong to India. So this particular party tries to somewhere protect the identity, the social identity of Assam in India. So now it assumes power in Assam for many years. So it's a very important party in Assam. So let us move to the next party, which is the Dravida Munnetra Kazhagam. This particular party came into existence in 1920. It was a non-Brahmin movement in 1920, was transformed into Dravida Munnetra Kazhagam, a political party in 1944. Justice Party came to be known as Dravida Kazhagam. So ये जस्टिस पार्टी से इसका नाम चेंज करके द्रविड़ा काजगम कर दिया गया। 1940 में एक ग्रुप सेपरेटेड फ्रॉम दिस पार्टी एंड एस्टेब्लिश्ड अनदर पार्टी नेम एज द द्रविड़ा मुनेत्र काजगम। तो द्रविड़ा काजगम से सेपरेट होके ये पार्टी बन गई द्रविड़ा मुनेत्र काजगम। अनदर ग्रुप सेपरेटेड फ्रॉम दिस पार्टी इन 1972 एंड एस्टेब्लिश्ड ऑल इंडिया द्रविड़ा मुनेत्र काजगम। सो डिफरेंट टाइप्स ये कह सकते हैं इस पार्टी से बिकॉज ऑफ इंटरनल जो भी प्रॉब्लम्स हुआ होगा, कई सारी पार्टियाँ सेम नाम की सेपरेट हो गई। तो इस पार्टी का काम है प्रोटेक्शन ऑफ तमिल आइडेंटिटी, मेंबर ऑफ कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर फॉर सम ईयर्स। तो तमिलनाडु के लोगों के लिए काम करने वाली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टी है ये कोalition गवर्नमेंट में पावर में थी कई सालों तक। So the party has support of voters from the all sections in the society. It was in power for a long period and implemented many policies. तो ये politics में कई सालों से, तमिलनाडु के politics में बहुत सालों से काम। So in India there are many regional parties in every state which have influenced the state politics. The following chart shows the performance of regional parties in Maharashtra in the election of 2009 and 14. सो हर एक रीजन में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है, रीजनल पार्टीज़ है, नेशनल पार्टीज़ है। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया हुआ है, ये दिखाता है हमें कि महाराष्ट्र में रीजनल पार्टीज़ किस तरह से प्रेजेंट परफॉर्म करती है विधानसभा में। सो द नेम ऑफ द पार्टी शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन महासंघ, Republican Party of India and Samajwadi Party. So these are the parties and how they performed in the year 2009 to 2014. So we can see dip of votes, a rise of votes in Shiv Sena compared to 2009 to 2014. So this is a very big loss, I say, for Maharashtra Nav Nirman Sena. 2009 it was 13, now it's 1, 4 to 3. No change here, no change here. Samajwadi Party also lost some votes here, and a representation in the Vidhan Sabha. We can clearly see Bahujan Vikas Aghadi. These are the names of all those regional parties
And now this party did not exist in 2009. So some of these parties did not exist at the elections of 2009, which came later on. Okay, this All India Mazile Intedullah Muslimin. So this is the name of the party which did not exist in this particular election. It's a new party. It came into existence by 2014. So in this particular chapter, we have seen what are national and international political parties do in India. In the next chapter, we shall try to understand the importance of social movements in our life.